everyone. In this topic we will be learning about application of differential equation, application of Laplace transform to the differential equation. इसके स्टार्टिंग में जब भी मैंने एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था उसमें भी मैंने इस पॉइंट को बोला था कि लैप्लास काफ़ी यूज़फुल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज व्हेनेवर वी कम अक्रॉस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन होता है इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस काइंड ऑफ टर्म्स, डिफरेंशियल टर्म्स कम्स इन इट. सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करना. सो हाउ बाय यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू दिस काइंड ऑफ इक्वेशन we can convert it into algebraic equations. So those are quite easy to simplify it. So that's the reason we apply here we can apply the Laplace transform for this differential equations. It's very important application, and here we will be solving the question on it, so it will be clear for us how we can use it. Now I have written in briefly like using Laplace same what I have told just now. Using Laplace transform, differential equation can be solved very fast and easily. So it's a very powerful technique of doing that. So the given question is d square y by dt square plus 9y is equal to 6 cos 3t. The given equation is d square y by dt square plus 9y is equal to 6 cos 3t, and by using Laplace transform we have to simplify it. So सबसे पहले given equation, differential equation, we will try to write it in this format. जहाँ पे if you can see this, it's a double differentiation. So instead of that, in terms of y, how can I write it? It's a y double dash of t, जबकि जो कि given function t के form में, so that's why. And then this is instead of for this 9y, I can write it 9y of t. राइट हैंड साइड जो भी है एज इट इज़ मैंने लिख लिए. नाउ वी विल स्टार्ट अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ द साइड. सो आई जस्ट पुट द लेफ्ट हैंड साइड इनसाइड द ब्रैकेट एंड आई अप्लाइड द लैप्लास. सेम वे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ फंक्शन है वहाँ पे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है. यहाँ पे 6 होना चाहिए विच विल बी द कॉन्स्टेंट आउटसाइड द लैप्लास. So now let's start taking the Laplace of this. Before taking here how we can take the Laplace. After taking Laplace of this one, it will convert into S square for S format. So since it's a double differentiation, तो ये convert हो जाएगा S square y by y of S. और इसको हम simplified way से how we can write it, it's S square की power हम करते चले जाएंगे. यहाँ पे इसकी power 1 हो चुकी है. देन y ऑफ 0, देन यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश ऑफ 0. दिस इज होल थिंग, दिस होल ब्रैकेट वी हैव रिटन इट फॉर दिस वन y ऑफ डबल डैश ऑफ t के लिए हमने लिखा हुआ है. नाउ दिस फॉर दिस 9y ऑफ t व्हाट वी कैन राइट जस्ट 9y ऑफ s, क्योंकि वो दैट्स नॉट अ डिफरेंशियल टर्म, तो सिर्फ हम वैसे ही उसे छोड़ देंगे. नाउ we know cos of 8 is formula s upon s square plus s square, जहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो हम उसे लिख देंगे 6 is outside constant, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. So we just simplified applied the simple formula of Laplace to that function. So this is what we received it. Now if you try to simplify it here by just multiplying over here, this is what we have received. I have just taken out this square bracket, nothing else, we have done it over here. Now simply what we can do it, y of s from this we can take it out common, तो रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर s square plus 9 minus 2s, right hand side as it is, carry forward. Now we will try to get this whole equation in terms of y of s. So whatever is there along with this left hand side along with y of s, we will try to shift it on the right hand side. So सबसे पहले तो ये 2s यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, if you shift it right hand side that will become 2s plus, and ये y of s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा. So y of s हो जाएगा ये 6x upon x square plus 9. पहले 2s को हम शिफ्ट करेंगे
and after that we will be shifting this s square plus 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, then it will be multiplied to the whole thing. इसको भी multiply हो जाएगा, then it will become square, and here also it will get multiplied. So this is how we got it. So just by shifting terms on the right hand side we have received it. So now it is quite easy to take Laplace of both the sides, because if you see it here, these are in, we have converted into quite simpler format, so that we can put them in the format of formula, and we can write some function about it. So let's try to take Laplace of it. So by using Laplace inverse on the left hand side as well as on the right hand side, so I have just put Laplace inverse of it. If you look at the, if you try to correlate with the formulae which we have learned it. So if you see here, if you take this 6 outside the Laplace inverse, and that will be become s upon s square plus 9 bracket square. This is the what we can write about is cos of, this is a cos formula. So what we can write, and here also 2 is something constant which we can take outside it, outside the Laplace inverse. So यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, and s upon s square plus 9 वो तो cos 80 का फॉर्मूला होता है, that we have written about it. और यहाँ पे हमने साइन लिखा हुआ है for this one, जहाँ पे a की वैल्यू जो है 3 है, so sin 3t लिया हुआ है, एंड जब भी साइन आता है तब हमें पता है कि ये दिस इज़ 1 upon a, वी हैव टू राइट इट, a की वैल्यू जो है वो है 3, सो दैट वी हैव टेकन इट हियर, एंड सिंस इट्स अ t ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट t upon 2a, so that's the reason here t upon 2a आ चुका है. If you simplify it here, this will be t into sin 3t, मतलब इसको simplify करेंगे, so आ जाएगा t into sin 3t plus 2 cos 3t. So this is how we have simplified the given differential equation by using Laplace inverse and by using the Laplace transform. So this is quite important application. So whenever the given equation will be in the differential format, we can easily convert it into simple linear algebraic equation, and we can use the Laplace transform to simplify it. Hope it is clear for you. Thank you.